Assalamu alaikum dear students. Today we are going to complete this lesson of your English book, that's MAT Party. So dear students, open your book at page number 24. Dear students, so far we have seen that Dermos tells a story of three sisters who lived at the bottom of a well, but Else was so confused and asks him why did they live at the bottom of a well. So what happens next? Let's see. The Dormouse again took a minute or two to think about it and then said, "It was a honey well." "There is no such thing," Alice was beginning to say very angrily, but the Hatter and the March Hare went shh shh, and the Dormouse remarked, "If you can't be polite, you'd better finish the story for yourself." "No, please, go on," Alice said. "I won't interrupt you again." जो एल्स होती है तो वो डरमास को पूछती है कि वो इसके वेल के बॉटम पर क्यों रहती थी। सो डरमास 1-2 मिनट के बाद जवाब कहता है, इट वॉज ए हनी वेल, कहता है कि ये हनी वेल था, ये शहद का कुआं था। देयर इज़ नो सच थिंग, एल्स वॉज बिगनिंग टू से वेरी एंग्रीली, एल्स गुस्से से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। बट द हेटर एंड द मार्च हियर वेंट, उन्होंने कहा एंड द डोमॉस रिमार्क, डोमॉस ने कहा, इफ़ यू कांट बी पोलाइट यू बेटर फिनिश द स्टोरी फॉर योर सेल्फ। सो डोमॉस एलिस से कहता है, अगर आप पोलाइटली बिहेव नहीं करोगी तो यही बेटर रहेगा, आप इस स्टोरी को खुद ही फिनिश कर दो, आप इस स्टोरी को खुद कंप्लीट कर दो। नो प्लीज़ गो ऑन, एल्स सेड, आई वोंट इंटरप्ट यू अगैन। सो एल्स कहती है, नहीं सुनाइए, मैं आपको फिर से इंटरप्ट नहीं करूँगी। इंटरप्ट ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ, ओके, बात काटना। द डोमॉस एग्री टू गो ऑन, and so these three sisters, they were learning to draw. So Damas agree हो गया कहानी सुनाने के लिए. So these three sisters, they were learning to draw is defined as to pull or attract something or someone, to make lines, pictures or figures with a writing device. Okay, so what did they draw? खींचना यहाँ पर. What did they draw? Said Alice, quite forgetting her promise. वो भूल जाती है, उसने कहा था मैं अब इंटरप्ट नहीं करूँगी, उसको फिर से बोलती है कि वो क्या ड्रा करते थे, वो क्या खींचते थे. Honey, said the Dormouse. Dormouse कहता है कि वो हनी ड्रा करते थे. Alice did not wish to offend the Dormouse again, so she began very carefully, but I don't understand, where did they draw the honey from? सो एल्स कहती है, मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह से ये हनी निकालते थे. यू कैन ड्रा वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल, सेड द डोमॉस. सो आई थिंक यू कुड ड्रा हनी आउट ऑफ ए हनी वेल, कुडंट यू? सो डोमॉस कहता है उसको कि आप वाटर वेल यानी पानी के कुएं से वाटर निकाल सकते हो, पानी निकाल सकते हो, said the dormouse. So I think you could draw honey out of a honey well. So आप honey well से honey निकाल सकते हो, couldn't you? But they were in the well, Alice said to the dormouse. Alice कहती है dormouse से, वो तो कुएं के अंदर थी, but they were in the well. Okay? Of course they were, said the dormouse. In the well. हाँ, वो कुएं के अंदर थी. This answer so confused poor Alice that she let the dormouse go on for some time without interrupting it. So इस आंसर से एलिस बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ गई. So अब इस बार उसने डोमॉस को इंटरप्ट नहीं रोका, वो कहता रहा. They were learning to draw. The dormouse went on, yawning and rubbing its eyes, for it was getting very sleepy, and they drew all kinds of things, everything that begins with an M. So अब उसको बोलता है कि वो क्या सीख रही थी? ड्राइंग. दे वर लर्निंग टू ड्रा, यानी वो ड्राइंग करना सीख रही थी. द डोमॉस, तस्वीर बनाना. द डोमॉस went on, yawning and rubbing its eyes, for it was
गेटिंग वेरी स्लीपी। सो जो डरमास ने ये बात अपनी जारी रखी यार्निंग करते हुए और अपनी आँखों को रब करते हुए, क्योंकि अब उसको नींद आ रही थी। एवरीथिंग एंड दे ड्रू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग दैट बिगिन्स विद एन एम। सो वो हर चीज़ बनाते थे, वो चीज़ जो एम से शुरू होती। वाई विद एन एम सेड एल्स, वो बोलती है एम से क्यों। वाई नॉट सेड द मार्चियर, क्यों नहीं, मार्चियर कहता है। एल्स वॉज साइलेंट, सो एल्स खामोश थी। द डोमॉस had closed its eyes and was going off to sleep, but the hatter pinched him and it woke up again with a little cry and went on. So अब जो डरमास ने अपनी आंखें फिर से बंद कर दी। ओके, डरमास had closed the डरमास had closed its eyes and was going off to sleep. डरमास ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली थी, अब वो सोने जा रहा था। तो but the hatter pinched him and it woke up with a little cry and went on. So जो hatter था, hatter ने उसको pinch किया, okay, and it woke up again with a little cry and went on, और वो फिर से कहानी सुनाने लगा। That begins with an M, such as mousetraps and the moon and memory and muchness. You know, you say things are much of a muchness. Did you ever see such a thing as a drawing of a muchness? So वो स्टोरी फिर से बिगिन करता है कि वो उन चीज़ों की पेंटिंग करती थी जो एम से शुरू हो, सच एज ये माउस ट्रैप्स एंड मून एंड मेमोरी मचनेस। सो एलिस कहती है, डिड यू एवर सी सच अ थिंग एज अ ड्राइंग ऑफ ए मचनेस? क्या आपने मचनेस की कोई ड्राइंग देखी है? रियली, नाउ यू आस्क मी, सेड एल्स, वेरी मच कन्फ्यूज्ड। आई डोंट थिंक आई हैव। तो एल्स ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी है। देन यू शुड नॉट टॉक, सेड द हैटर। तो हैटर उसको बोलता है कि आपको फिर बात नहीं करनी चाहिए। दिस पीस ऑफ रूडनेस वॉज मोर देन एल्स कुड बियर। शी गॉट अप इन ग्रेट डिस्गस्ट एंड वॉकड ऑफ। द डोमोस fell asleep instantly, and neither of the others took any notice of her going. She looked back once or twice, half hoping that they would call after her, but they didn't. The last time she saw them, they were trying to put the dormouse into the teapot. So, जब इसने हैटर ने कहा कि आपको बात नहीं करनी चाहिए, then you should not talk. So this piece of rudeness was more than Alice could bear. So ये rudeness Alice bear नहीं कर पाई, Alice बर्दाश्त नहीं कर पाई rudeness बद तहजीबी। Okay, she got up in great disgust and walked off. Okay, disgust, you know, नफरत। वो खड़ी हो गई और वहाँ से चल पड़ी and walked off. The dormouse fell asleep instantly. So जो dormouse था वो उसी पल सो गया, instantly, immediately, quickly, okay, फौरन। And neither of the others took any notice of her going. उन दोनों ने उसकी तरफ कोई, जब वहाँ से जा रही थी, उन दोनों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। She looked back once or twice, half hoping that they would call after her, but they didn't. So उसने एक दो बार पीछे मुड़ के देखा, दिल में ये उम्मीद की हुई ये मत मुझे आवाज़ देंगे, but they didn't. उन्होंने नहीं बुलाया उसको वापस। The last time she saw them, they were trying to put the dormouse into the teapot. So last time जब एल्स उनकी तरफ मुड़ के देखती है, so वो क्या कर रहे थे? They were trying to put the dormouse into the teapot. वो teapot में जो dormouse था उसको भरने की कोशिश कर रहे थे। Okay, so this is all about today's topic. Thank you. Take care.